is also known as the GIT, or it is known as the alimentary canal. It is made up of different organs, and mostly आप देखें कि आपका जो digestive system है, the first part of the digestive system of man is mouth. Then most of the part of the pharynx. Pharynx क्या होता है? Pharynx होता है जो throat region होता है, जो गला होता है. ठीक है, most of the part of the pharynx, because this is sharing some part with the nasal cavity also. उसमें nasopharynx, oropharynx और ये सारी चीजें जो है ना, ये लेकिन most of the pharynx is a part of the gastrointestinal tract or the digestive system of man. The esophagus, which is the food pipe, लिखते जाइए साथ साथ. The stomach, which is the digestive bag where the main digestion of proteins is going to start, and the small intestine and large intestine. Associated with the digestive system are different organs also, which are helping and easing the work of digestion. जैसे कि teeth है, जैसे कि tongue है, जैसे कि salivary glands हैं, जैसे कि liver है, gallbladder and pancreas. These are all the accessory organs that are helping in the process of digestion. ठीक है. Now, first of all, when we come to the mouth is also known as the oral cavity. It is also known as the oral cavity. यहाँ से देखिए, this is the mouth, this is the throat region, this is the esophagus, this is the stomach, the duodenum. This is the first part of the small intestine, which is very thick and muscular in nature. This is the small intestine, convoluted hai. This is the large intestine, which is larger and thicker in size, and it has a larger diameter. Okay, right. Now, when we come to the इस presentation के अंदर इतना ज़्यादा detail नहीं है, साथ साथ मैं आप लोगों को detail भी बताती जाऊंगी. The digestion of food begins when the food enters the mouth. Inside the mouth, we have two types of digestion. I won't be going to the board at present. आप जरा लिख लीजिए. The two main types of digestion is actually, first of all, the mechanical digestion and then the chemical digestion. The mechanical digestion, is that digestion in which the food is physically broken down by the teeth. And it is helped by, and this process is helped by the tongue. The tongue is also an accessory organ of the oral cavity. The mouth is also known as the oral cavity. The tongue is the accessory organ of the oral cavity. When the food enters the mouth, it is physically broken down by the teeth, and these are known as, this process is known as the mechanical digestion. By breaking down the food by the teeth, more of the surface of the food is going to be exposed, and smaller parts जो हैं वो हो जाएंगे, food के smaller pieces हो जाएंगे, which is going to ease the process of digestion. The teeth, ये देखिए, the teeth and the tongue, these two are the accessory organs that are going to help the mechanical digestion. The teeth, when you look at the teeth over here, the teeth, when you look at them, they are of different structures. At the front, we have these chisel-shaped rectangular teeth, which are 4 in number. ऊपर नीचे आपके पास 4 हैं. These are known as the incisors. Teeth are actually hard, calcareous structures which are present in the mouth of all mammals. ये आपके पास incisors हैं, which are used for cutting of food. Then behind the incisors on both sides, we have canines. These are pointed teeth. These teeth, the canines, are used for tearing flesh. Flesh को खींचने, flesh को तोड़ने में काम आते हैं. These canines are most highly developed in carnivores. These incisors are most highly developed in herbivores. But because man is an omnivorous being, so what happens is man is provided with all the types of teeth. ठीक है, लेकिन animals के अंदर आप देखेंगे, depending upon the function of the teeth, these teeth, they are present in them. Now in goats you can observe कि उनके incisors बहुत strong है, लेकिन जो canines हैं, they are not very highly developed. Then behind the canines we have the premolars. Premolars का मतलब before the molars. And at the end, these premolars
because they are large teeth, they are flattened teeth. These premolars are used to mechanically break down the food into smaller pieces to ease the mixing of the food with the digestive enzymes. ठीक है, फिर आखिर में आपके पास मोलर्स हैं. मोलर्स क्या है? ये बहुत बड़े वाले टीथ हैं. दे आर प्रेजेंट बिहाइंड द जो है वो द ओरल कैविटी, द लास्ट पार्ट ऑफ द जॉज में ये प्रेजेंट है. द लास्ट मोलर्स व्हिच आर नोन एज अ विजडम टीथ इन मैन, दीज आर nowadays they are being declared as vestigial organs. वेस्टिजियल ऑर्गन्स का मतलब ये है कि इनका इतना यूज अब नहीं है. दे आर नॉट बीइंग यूज्ड. दीज लास्ट टू, जो लास्ट जो चार हैं, जो आपके विजडम टूथ जिनको कहते हैं, ठीक है, लास्ट जो मोलर्स हैं, दीज आर नॉट वेरी वेरी इफेक्टिव, दे आर नॉट वेरी यूजफुल एंड यू डू नॉट च्यू फूड इन दैट पार्ट ऑफ योर माउथ. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फिजिकल ब्रेकडाउन, व्हिच इज आल्सो नोन एज मैकेनिकल डाइजेशन. मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज एक्चुअली द फिजिकल ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस and the reduction of the size and exposure of more surface of the food so that more enzyme can be mixed and more digestion should take place. ठीक है बेटा. अब उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है, दैट इज द केमिकल डाइजेशन. नाउ आई टोल्ड यू दैट द माउथ इज मेड अप ऑफ वेरियस एक्सेसरी ऑर्गन्स, द टीथ, द टंग. नाउ द टंग इज एक्चुअली, इट इज अ नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, लेकिन द टंग हैज सम पॉइंटेड रफ स्ट्रक्चर्स ऑन टॉप ऑफ इट व्हिच आर नोन एज पैपिली. ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है. पैपिला है अपना माउथ के ऊपर, टंग के ऊपर, और ये पेपिला क्या करते हैं? इट गिव्स अ रफ अपीयरेंस टू द टंग एंड इट हेल्प्स द टंग टू कंट्रोल द फूड एंड प्रिवेंट द स्लिपिंग अवे ऑफ फूड. आपकी टंग इससे रफ होती है थोड़ी सी. इनसाइड द टंग आर प्रेजेंट द टेस्ट बड्स. टेस्ट बड्स आर स्पेशली जो है डेवलप्ड सेल्स व्हिच जो है they give us the feeling of taste of different types of foods that we eat, and the taste buds are present all over the tongue, लेकिन they are various taste buds are concentrated at different portions. तो इस वजह से हम कहते हैं कि जी जो है साइड पर कुछ है और फ्रंट पे कुछ है और ये टेस्ट बड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है. लेकिन देखा जाए कि टेस्ट बड्स they are all overlapping in the tongue. ठीक है, this is a part of the tongue. The tongue helps to roll and mix the food together, and the tongue helps to mix the saliva with the food. The next part of the digestion is the chemical digestion. The chemical digestion जो है, it starts in the mouth, and the chemical breakdown of which food, the chemical breakdown of carbohydrates starts in the mouth. कोशिश करें बेटा सब कुछ साथ साथ लिखते जाएं. ठीक है, ताकि बस ये लेक्चर सिर्फ आप लिख लें और इसको एक दफा आप रीड कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर, आपका ये टॉपिक्स जो है ये रेडी हो जाएंगे. It begins the chemical digestion by amylase, and amylase is an enzyme that is produced by saliva. In saliva, and amylase क्या होता है? Amylase, it breaks down carbohydrates into smaller structure, into smaller chemicals. I have shared the screen with you people. I have shared the image with you people. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि saliva जो है, where is it produced from? Now we have some accessory glands also present inside the buccal cavity, and that accessory gland वो क्या है? That accessory gland is actually the salivary glands. ठीक है, ये देखिएगा. Oral or the buccal cavity, how is it formed? It is formed by the cheeks. It is formed by the hard and the soft palates and the tongue. It has three main functions: the selection of food, the grinding and mastication of food, the lubrication and digestion of food. Selection of food, ठीक है, ये तो आपका एक फिजिकल जो है वो एक्टिविटी है. फिर 1, 2, 3 grinding, mastication, lubrication, this is mechanical digestion, and then digestion, ये आपकी केमिकल डाइजेशन है. ये देखिए, ये आपका दिस इज द सॉफ्ट पैलेट. बुक के अंदर स्केच इतना अच्छा नहीं बना हुआ. ये देखिए, दिस इज द सॉफ्ट पैलेट जो पीछे वाले हिस्से में है थ्रोट के साथ. दिस इज द हार्ड पैलेट व्हिच इज द बोनी पार्ट. ठीक है, दिस इज द
hard palate जो कि bony part है, right? Okay, now let us go next. When the food enters the mouth, chemical digestion begins. Chemical digestion begins. एक चीज आप लोगों को बताती हूँ. At the sight, smell, and taste of food, the salivary glands are going to be stimulated. The salivary glands will be stimulated and they will produce saliva. ठीक है? क्या है? And on the taste, the smell, or the sight of food, आपके salivary glands खुद ब खुद secretion जो है, they start the secretion of saliva. Smell of food को हम अगर aroma of food कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है. Salivary glands, they release saliva. We have 3 pairs of the major salivary glands which secrete most of the saliva. The parotid, the submandibular, and the sublingual. Sublingual under the tongue. Submandibular inside the lower jaw. Parotid towards the ear regions on both sides. ठीक है, ये इनकी पोजीशंस हैं, आपको मैं दिखाती हूँ. Right, now look here. ये देखिए, this is the tongue that has been raised. ये आपके पास टंग है जिसको हमने रेज कर दिया है. This is the sublingual. एरो को देखिए, this is the sublingual. ये sublingual है under the tongue. इस सबलिंगुअल के नीचे थोड़ा सा बिहाइंड इट इज प्रेजेंट द सबमैंडिबुलर. ठीक है, सबमैंडिबुलर जो कि इसके बिल्कुल थोड़ा सा इसके पीछे है. दीज आर स्पेसिफिक एंजाइम ग्लैंड्स जिनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. दे हैव डक्ट्स एंड दे पोर द सिक्रीशंस इनटू द बुकल कैविटी. ये हमारे पास बेटा, ये देखिए, ये आपके पास सबमैंडिबुलर है जो कि जॉ के करीब है. सबलिंगुअल, lingual, tongue, under the tongue, then parotid towards the ears. Parotids की infection हो जाती है तो ये swell up कर जाते हैं, and that disease in which the parotids swell up, that disease is known as mumps. उसको हम कहते हैं mumps, जिसको कनपेड़े कहते हैं. अमूमन बच्चों को हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो it is these parotids जो कि swell up कर जाते हैं. ठीक है, अमूमन जब खट्टा खाते हैं तो फिर इनके अंदर आपको महसूस होता है कि यहाँ से सिक्रीशन स्टार्ट हो रही है. ठीक है, दीज आर द पैरोटिड्स. देखिए, ये सबलिंगुअल है, ये सबमैंडिबुलर है, और ये आपके पास पैरोटिड्स है. इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड्स जो है, दीज आर गोइंग टू गिव यू द दिस इज व्हाट हैपेंस इन मम्स. केमिकल डाइजेशन के अंदर आपके पास क्या होता है कि सलाइवरी एमाइलेज इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस. सलाइवरी एमाइलेज हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दिस इज द एमाइलेज दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द माउथ. We have another amylase that is present inside the that is going to be produced in the intestinal region, pancreatic amylase. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं salivary amylase. वहां पर हम स्पेसिफाई करेंगे pancreatic amylase. The nature of the enzymes is the same. Saliva has 3 most important ingredients. First of all, water है. 99.5% हमारे पास saliva के अंदर water है बेटा. ठीक है, फिर हमारे पास we have sodium bicarbonate, and sodium bicarbonate, it gives it the अपना the medium, the suitable medium जिसके अंदर जो है इसने काम करना है. ठीक है, and it also acts as an antiseptic and it helps to maintain a suitable medium inside the mouth, which is most of the time, ज्यादातर it is a favorable range जो है वो क्या है, वो towards जो है वो neutral ज्यादा बेहतर ये काम करता है. फिर उसके बाद we have the carbohydrate digesting enzyme, which is a salivary amylase, which acts only and only on starch. I told you in the class कि जब हम ये पढ़ रहे थे, एंजाइम्स पढ़ रहे थे, I told you in the class कि जब आप घर जाएंगे तो आपने जो है ना रोटी को या चावल को इतनी देर तक चबाना है कि it becomes sweet in your mouth. Why? You have to chew the food for so long that most of the starch it breaks down into simpler disaccharides. Because starch, you know, it doesn't have a sweet taste, but once you start to perceive the sweet taste, it means that the starch has started to break down. फिर उसके बाद आपके पास various types of mineral salts are present inside saliva. Then there is something that is present in that saliva which is known as mucin. यहाँ लिखा हुआ नहीं है, mucin book में आपके लिखा हुआ है.
म्यूसिन क्या करता है? म्यूसिन जो है it makes the saliva a little bit lubricant. It makes the saliva as a lubricant and it helps to soften the food. It helps to soften the food. It helps to mix the food with water, and then it helps the teeth and the tongue to help to mix the food and create small ball-like structures which are known as bolus. Now this bolus, it has to pass on into the gastrointestinal tract, the next part of the gastrointestinal tract via the pharynx. Only 3 to 5% of food digestion takes place inside the buccal cavity या inside the oral cavity. बाकी क्या है, इतनी जल्दी खाते हैं हम लोग, इतनी जल्दी हम swallow करते हैं चीजों को कि कभी कभी तो 3 to 5% भी नहीं होता है. Now look here, this is the pharynx. मैंने आपको बताया था nasopharynx का हिस्सा है, ओरोफेरिंक्स का हिस्सा है, ठीक है, जो माउथ की तरफ. फिर ये फेरिंजियोफेरिंक्स है, यहाँ पे इन्होंने हाइपोफेरिंक्स लिखा हुआ है. इट इज आल्सो नोन एज फेरिंजियोफेरिंक्स. दीज आर एक्चुअली द 3 पार्ट्स ऑफ द फेरिंक्स. अपने लिए लिख लीजिए आप लोग. नेसोफेरिंक्स है, ओरोफेरिंक्स है, फेरिंजियोफेरिंक्स है. दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ द फेरिंक्स व्हिच इज आल्सो नोन एज द थ्रोट. The tongue forms the food in small ball-like structures, and that small ball-like structure is known as the bolus. The bolus is then passed down to the pharynx, that is the throat, and then on top of the food pipe, ये देखिए, this is the food pipe. ठीक है, ये आपके पास, ये देखिए, ये आपके पास फूड पाइप के अंदर इसने जाना है. ये जो चीज है ना फ्रंट पे, ये देखिए, this is the windpipe. And windpipe के ऊपर, this is the cover which is known as the epiglottis. When the tongue pushes the food down, this cover is going to shut the windpipe. Windpipe is present on the front and food pipe is present behind. And the food passes over the epiglottis and comes into the food pipe. इसलिए कहते हैं कि खाना खाते हुए बोलना नहीं है. क्यों नहीं बोलना? क्योंकि अगर आप बोलेंगे खाना खाते हुए तो ये आपका ट्रेकिया ओपन होगा वोकल कॉर्ड्स के काम के लिए, एंड देन देयर इज चांस कि फूड कैन गो ऑन अ रॉन्ग रूट एंड इट कैन कॉज सम कफ और इट कैन कॉज सम चोकिंग, खुदा ना खास्ता. ठीक है, तो स्वॉलोइंग का जो प्रोसेस है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं. राइट अ नोट ऑन द केमिकल डाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इन द माउथ. ठीक है, write a note on the chemical digestion that takes place in the mouth. What is the role of the accessory organs that are present inside the mouth? What is the position of the salivary glands? What is the importance of the teeth and the tongue in the oral cavity? To the class, थोड़ा सा सिग्नल इशू हो जाता है, इस वजह से जो है ना क्लास हमारी जो है बंद हो गई, तो सॉरी. चलें जी, वापस जाते हैं लेक्चर के. ये देखिए, यहाँ पर हम आ गए. ये ठीक है, अब आपके पास क्या चीज है बेटा? आपके पास, आई वाज टेलिंग यू अबाउट द वेरियस स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द माउथ. एंड माउथ के अंदर स्वॉलोइंग का प्रोसेस कैसे होता है. स्वॉलोइंग का प्रोसेस कैसे होता है बेटा? आप आ जाइए अपनी बुक की तरफ. First of all, the food is chewed inside the mouth. Food को चबाया जाता है. It is softened. It is transformed into a ball-like structure, which is known as the bolus, and then it is pushed into the pharynx. How is it going to be pushed into the pharynx? Today, जब आपने food को swallow करना है, तो आपने इस चीज को observe करना है. What happens कि your tongue raises, ठीक है? Your tongue जो है, it rises a little bit. आपका जो सॉफ्ट पैलेट है, it moves back. The tongue rises and moves back. When your tongue rises and moves back, what happens? ये देखें, when your tongue it rises and moves back, it closes the epiglottis. This soft palate shrinks and moves back also, and the food is pushed into the pharynx. The start of swallowing is a voluntary process. आपने कब किसी चीज को swallow करना है, ये आपकी मर्जी है. It is a voluntary process. लेकिन once the food has passed into the digestive tract,
फिर आपकी मर्जी नहीं है, फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. देन इट मूव्स डाउन द डाइजेस्टिव ट्रैक बाय अ वेव ऑफ कंट्रैक्शन व्हिच इज नोन एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. एक और क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए. राइट अ नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सॉरी ऑन द प्रोसेस ऑफ swallowing. राइट अ नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ swallowing. तो इसमें यह है कि swallowing में सबसे पहले तो ये है कि the tongue shortens, it moves up and moves behind, and because of the moving up and moving behind of the tongue, it creates a pressure on top of the epiglottis, and epiglottis क्या है, वो भी डाउन हो जाता है, windpipe भी rise कर जाती है, and the epiglottis covers the windpipe. The opening of the windpipe is known as the glottis. Then the soft palate and hard palate, the soft palate moves behind, it shrinks, and the food is pushed into the pharynx according to your will. But once the food is pushed into the pharynx, it then goes down the esophagus, and inside the esophagus, once inside the esophagus, then you cannot control the movement of the food. The food moves along the digestive tract by a movement which is known as peristalsis. Peristalsis is a rhythmic movement of the food through the digestive system. Rhythmic waves हैं which push the food forward and propels the mass of food through the digestive tract. ठीक है? As peristalsis occurs, the food moves forward. Sometimes the direction of this peristaltic movement के opposite हो जाता है. So that is called antiperistalsis. एंटीपेरिस्टाल्सिस की वजह से क्या होता है? एंटीपेरिस्टाल्सिस की वजह से आपको वोमिटिंग आ जाती है, नोजियाटिक हो जाते हैं. when the peristalsis becomes antiperistalsis, if there is something inside your stomach which is not good for your digestive system, which is irritating your digestive system, or if there is, I told you your digestive system, it gets stimulated on the taste, on the smell, on the sight of food. आपका digestive system जो है वो ready हो जाता है to receive the food. अगर किसी food की smell बुरी है या किसी food की taste बहुत बुरी है, ठीक है, या बहुत गंदे तरीके से वो food बना हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा? आपको you start to nauseate. Why? Because your digestive system is not ready to accept that food. तो उस वक्त क्या होता है? योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट रेडी टू अलाउ द फूड इनसाइड. आपको फिर क्या होता है? आपको उबकाई आनी शुरू होती है, आपको उल्टी आनी शुरू होती है. एंड इफ यू फोर्स डाउन द फूड इनटू योर स्टमक, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है कि यू वोमिट इट आउट बिकॉज योर फूड इज नॉट गोइंग टू रीच द डाइजेस्टिव सिस्टम. मुंह के अंदर भी अगर आप रखते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू swallow it because the peristaltic movement does not begin. What is peristalsis? Peristalsis is a wave of muscular contractions that pushes the bolus down towards the stomach in case the food is good for your body. अगर फूड बासी है, अगर फूड गंदा है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी उस फूड को एक्सेप्ट नहीं करेगा. समझ आ गई बात की? आई होप कि ये याद हो गया होगा. नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा, इसमें आपके पास जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि डिफाइन पेरिस्टाल्सिस. हाउ इज पेरिस्टाल्सिस इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम. फिर उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आ सकता है, नेम द एक्सेसरी ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द बुक्कल कैविटी. व्हाट इज द रोल ऑफ द एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ द बुक्कल कैविटी. व्हाई इज द टंग रफ इन नेचर. व्हाई डू वी हैव types of teeth present in the buccal cavity. ये सारे छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं. एंड आई थिंक कि आपको ये याद है. ठीक है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, वो ये स्टमक का स्ट्रक्चर आ सकता है, इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर आ सकता है. यू डोंट वरी एट ऑल. अगर क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, मैं हूं जिसने पेपर चेक करने. ठीक है, यू डोंट वरी एट ऑल. आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट मुझे अगर दे देंगे इसका, अगर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो यू हैव अ चॉइस टू ड्रॉप इट. लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया एंड यू थिंक कि आप उसको लिखेंगे, तो यू बी वेरी वेल अश्योर्ड कि डाइजेशन में से या 10.4 के बाद जितने भी टॉपिक्स हमने ऑनलाइन पढ़े हैं वो फिर इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे से करेंगे फिर. ठीक है, और वो इंशाल्लाह आपके अच्छे से हो भी जाएगी. ठीक है, तो यू डोंट वरी. तो वी विल इंशाल्लाह वी विल डू समथिंग वेरी गुड इन द पेपर्स आल्सो.
Right. Next, now what we have is we have the next structure is the stomach. To enter the stomach, the bolus must pass through the lower esophageal sphincter. Lower esophageal sphincter, या हम इसको कहते हैं the cardiac sphincter. It is also known as the cardiac sphincter, the cardiac opening or the cardiac sphincter. This cardiac sphincter is present in this area, beta. यहाँ पर ये present है. It is present in this area, the cardiac sphincter. ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो प्रेजेंट है, और ये क्यों प्रेजेंट है?